Welcome once again, all friends. In the previous class, we have discussed the process of oogenesis, जिसमें हमने देखा कि before the girl child is born, the oogenesis process begins in the small ovaries of the small little fetus of the girl child. This goes through steps such as primary oocyte to secondary oocyte. Primary oocyte becomes a secondary oocyte and a single polar body. ये प्रोसेस पूरा हो जाता है. जब तक ये प्रोसेस पूरा हो रहा है तब तक उसके सराउंडिंग सेल्स के साथ उसने जो फॉलिकल बना हुआ है वो फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल ये स्टेजेस कंप्लीट कर लेता है. दिस वे starting in early embryonic life but stopping for 10 to 12 years and then again starting a few follicles at a time over the next 30-40 years till about 45-50 years of age. About 400 follicles are produced by a female in a lifetime, which reach the Graafian follicle stage and which result in the release of about 400 ova in the lifetime of the female, each as a secondary oocyte. ये oogenesis का शॉर्ट समरी हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया उसका ये शॉर्ट समरी है. अब हम बाकी की फीमेल फिजियोलॉजी यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, उनके फंक्शंस, उनका रोल और इनके बॉडी में क्या क्या असर होते हैं, ओवरी के अंदर क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, यूट्रस में क्या प्रोसेसेस होते हैं, ऑल ऑफ दिस वी विल नाउ ट्राई टू हैव अ लुक एट ओवर द नेक्स्ट couple of sessions. तो सबसे पहले let's start with, think of a baby girl who is not yet born, still a fetus, the fetus stage, unborn fetus stage of a girl child who is going to be born. ऐसे में at around 10 to 12 weeks we saw ovaries have started developing and inside the ovaries the oogenesis process has started. इसी में जैसे ovaries are being expressed or being produced, similarly external genitalia are also being produced, uterus is being produced, so a feminization process has happened and a female child is being developed. So during embryonic stage the feminization and the birth of a female girl child is achieved. But इसके आगे there is no significant hormone role for at least 10 to 12 years. 10 to 12 years of age तक baby girl के न pituitary active है न ovaries active है. They are all dormant, they are all inactive at this stage. And so beyond birth up to about 10 to 12 years, no real feminization or any other female hormone effect is visible, which is what we have seen in the case of males also. A male child born लगभग 13-14 साल की उम्र तक जब puberty onset होती है, जब male secondary sexual characters दिखना शुरू होता है, because of the release of some hormones from the pituitary such as FSH and ICSH, which start acting on the testes and start the spermatogenesis process as well as testosterone production, and that starts bringing about secondary male sexual character changes such as growth of a beard, दाढ़ी मूछ, facial hair बढ़ जाना, आवाज थोड़ी ज्यादा बेस हो जाना, and एक थोड़ी muscularity and broad shoulders and narrow at the waist, इस टाइप का फिगर डेवलप होते जाना, ये सारे इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाता है. Similarly, in the case of the female also, at around 10 to 11 to 12 years of age, it varies from person to person, we find that the pituitary gland in the female starts becoming active and it starts producing a hormone called follicle stimulating hormone, FSH. Follicle stimulating hormone, FSH. FSH का मेन एक्शन है फॉलिकल्स इन द ओवरी. ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है उनको स्टिम्युलेट करना.
As we have seen in the previous class, at about this stage, 40,000 to 50,000 to about 60,000 follicles are present inside the ovary. Under the effect of follicle stimulating hormone, some of them come out from dormant stage and start developing further. And they will go through progressive stages of development. But follicle stimulating hormone production is not one single level. It is not one uniform rate of production. It goes through ups and downs. And we will see that as it goes through ups and downs, follicle stimulation कभी थोड़ा बढ़ जाता है तो follicular growth तेजी से होती है, कभी कभी वो slow भी हो जाती है. So it is not a uniform rate, it is a changing rate. इसका like a graph, इसकी level कैसे change होती है थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे. There is another pituitary hormone called luteinizing hormone जो अभी तक इतने में produce नहीं हुआ है. Mainly follicle stimulating hormone produce हुआ है. जैसे follicle stimulating hormone कुछ follicles पे act करके follicular growth achieve करना शुरू करेगा. So as a few primary follicles start becoming secondary follicles and tertiary follicles and Graafian follicles, we said that these follicular cells, they give out a hormone called estrogen. इसको आप OESTROGEN ऐसे भी स्पेलिंग लिख सकते हो, ESTROGEN ये भी स्पेलिंग यूज कर सकते हो. दिस इज ब्रिटिश वे, दिस इज अमेरिकन वे, दोनों स्पेलिंग्स चलेंगे. तो इस तरीके से इनका ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. सो व्हेन विल ईस्ट्रोजन लेवल राइज? As follicles start increasing, which means after about 10, 11, 12 years of age. एक ही दिन में ज्यादा नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा. As more and more follicles start developing, more and more estrogen will be formed. Estrogen is the main female reproductive hormone. This is responsible for bringing about secondary sexual character changes in the female. What are the effects that it brings about? Under the effect of estrogen, we find that the female voice becomes a little more high-pitched. The female breast development begins. So a little bit of fat tissue starts getting deposited in the mammary gland in the breast region, and the glandular cells start increasing in numbers and start producing a structure which includes a few alveoli which are made up of cells along the lining and a hollow cavity in between, जिसके अंदर आगे चल के जब जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेट प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, इसके अंदर मिल्क बनना शुरू हो जाएगा. But at this moment milk production will not be starting, only they will increase in numbers and a few alveoli will start forming, and together with the fat tissue this will result in enlargement of the breast, increase in size of the breast, and so the female will start developing breast tissue at around this age. This development of breast tissue is called as thelarche, THELARCHE. So one important secondary sexual character changes, the female breast, the mammary gland start developing and increasing in size. Another important effect we said was the voice becomes more high-pitched. Typical female voice या girl's voice is high-pitched. वो थोड़ी ज्यादा ऊंची लेवल की आवाज होती है. इसका मतलब ये नहीं कि चिल्ला के बोलते हैं, इसका मतलब ये है that the frequency is a little higher. That is what we mean by high pitch. साथ ही साथ deposition of fat in certain body parts such as around the buttocks, around the waist, a little bit in the abdominal region, and of course breast tissue में तो we already said कि fat tissue is getting developed and deposited. So इस तरीके से थोड़ा fat deposition बदलता है. The pelvis becomes wider. Unlike the male where the shoulders are broader and the pelvis is narrower, in the case of the female the pelvis is broader. That is simply because pelvis जब broad होगी तभी तो उसके inner diameters बड़े होंगे और उसमें से baby at the time of childbirth will be able to pass through. So to make childbirth possible you need a wider pelvis. So that is why
that widening of the pelvis, all these effects will be brought about under the effect of the gradual increase of estrogen. ईस्ट्रोजन का असर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे है, ईस्ट्रोजन का असर फैट डिपोजिशन पे है, बहुत सारी इफेक्ट्स है, and it is affecting all these characters and the female physiology as well as the typical female secondary sexual characters have started developing. साथ ही साथ इसके साथ जैसे जैसे ये फॉलिकल्स बढ़कर ग्राफियन फॉलिकल स्टेज तक पहुंचेंगे और ओव्यूलेशन शुरू हो जाएगा, तो वी फाइंड दैट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस in a cyclical manner, month to month, we see that certain changes take place with regard to changes in hormone levels of the pituitary, changes in hormone levels of the ovarian glands, and which means the sex hormones. There are two main sex hormones, estrogen and progesterone. इनकी levels के उतार चढ़ाव शुरू हो जाएंगे, and साथ साथ ओवरी में कुछ स्पेसिफिक साइक्लिकल चेंजेस दिखेंगे, एज वेल एज यूटेरस, खास करके इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, इसमें भी कुछ खास चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा. ऑल दीज चेंजेस हैपनिंग इन अ साइक्लिकल मैनर. बाय साइक्लिकल मैनर व्हाट वी मीन इज, अभी जो हुआ वही एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद फिर एक बार रिपीट हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद फिर एक बार रिपीट हो जाएगा. सो लाइक व्हाट यू स्टडी इन फिजिक्स एज periodic motion, a satellite going around a planet, after suppose 5 hours completes one orbit, so after another 5 hours one more orbit, again after 5 hours one more orbit, same process repeating periodically, repeating again and again. Something similar, cyclical या periodic changes occurring every month, one month after another month, repetitively, is also what we start seeing. And these changes we term them as menstrual cycle. तो ये menstrual cycle actually कैसे होती है, उसके क्या stages है, ये अभी हमको देखना है. So let's now start studying the menstrual cycle. Menstrual cycles की शुरुआत, as we said, somewhere around 12, 13, 14 years के आसपास शुरू हो जाएगी. So we have already discussed that the female gamete formation process, oogenesis process, जो कि 10-12 साल के लिए थोड़ा ब्रेक लग के बैठा था, वो दोबारा शुरू हो जाता है as FSH starts getting secreted. And so at around the same time, some changes start taking place in the ovaries also, some changes start taking place in the uterus also, and all of this from this point, जैसे जैसे ओव्यूलेशन की शुरुआत होती है, वैसे वैसे मेंस्ट्रुएशन नाम के एक प्रोसेस की भी शुरुआत होती है. मेंस्ट्रुएशन इज अ प्रोसेस इन विच इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस, यूटरस का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया हुआ है. यूटरस हैज एक्सटर्नली a layer which we call as perimetrium, in the middle there is a lot of thick smooth muscle fiber which we call as myometrium, and innermost lining this is a changeable layer which becomes a little more blood rich at times, produces a lot of secretions, so rich in blood supply, rich in glandular secretions which can nourish, which can give a lot of energy. इस तरीके से एक लेयर बनते जाता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है. काफी बड़ा होने के बाद, which means around 12 millimeter to 15 millimeter size होने के बाद थिकनेस में, वो अगर प्रेगनेंसी है तो वैसे ही रहेगा और प्रेगनेंसी को फेवर करने के लिए ही तो वो बना है. द फंक्शन ऑफ द यूट्रस इज टू अलाउ फॉर द प्रेगनेंसी टू टेक प्लेस, टू गिव अ सेफ प्लेस वेयर नरिशमेंट विल बी अवेलेबल फॉर द डेवलपिंग फीटस, फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द फीटस. तो उसको फेवर करने के लिए ब्लड सप्लाई रिच होना जरूरी है, ग्लैंडुलर सेक्रीशंस व्हिच कैन बी यूज्ड एज फूड वो जरूरी है. आगे चल के एक यहां पे प्लेसेंटा फिट हो सकता है जिसमें से
exchange of gases, exchange of nutrients can take place. Baby can get its oxygen from mother's blood through the placenta. तो इस सब के लिए इसका इनर लाइनिंग अच्छा होना, मोटा होना, रिच इन ब्लड सप्लाई होना बहुत जरूरी है. मेंस्ट्रुअल साइकिल में शुरुआत के कुछ दिनों में, which means somewhere from about 4th 5th day onwards till about 14-15 days तक प्रोग्रेसिवली थिकनेस बढ़ता है, आगे भी और थोड़ा बढ़ते जाता है. एंड इन द टिपिकल 28 डे साइकिल ये एट द एंड ऑफ 28 डे काफी थिक बन गया है. 12 मिलीमीटर टू 15 मिलीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट, इतना साइज उसका हो गया है. अगर प्रेगनेंसी हुई ही नहीं तो लाइफ सपोर्टिंग वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी न्यूट्रिशियस लेयर इज प्रोड्यूस्ड. इसमें प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कोई ना कोई बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे, कोई फंगस ग्रो हो जाएगा. तो ऐसे में इसको रखना अच्छा नहीं है. इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द फीमेल. सो इट स्टार्ट्स गेटिंग शेड आउट एंड इट इज रिलीज्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ pieces of inner lining, endometrium, mucosa, plus a little bit of blood which has come out because the layer has got removed. तो थोड़ा सा bleeding जो हुआ है वो, और उसके clots, ऐसी सारी चीजें from out of the openings of the cervix. So cervix के inner os और outer os ये openings में से बाहर आके vagina में से भी बाहर आना शुरू हो जाएगा. So you will start getting bleeding through the vagina. It is not really bleeding, but it is actually endometrium tissue which is being lost. इस process को menstruation कहते हैं. This happens in all reproductive age females. It begins around 12 years of age and goes on till about 45, 50, in some cases even about 55 years of age तक. कुछ लेडीज में वो थोड़ा उससे भी पहले खत्म होता है, कुछ में उससे भी थोड़ा सा और ज्यादा तक चल सकता है, बट समवेयर अराउंड दिस एज तक ये चलता रहेगा. साइक्लिकल तरीके से चलता रहेगा. अप्रोक्सीमेटली एवरी 28 डेज की साइकिल में ये होता रहेगा. दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव एज रिलेटेड फिनोमिनन. एंड अराउंड 45 इयर्स और 55 एज तक जब जैसे खत्म हो जाएगा तो वी स्टार्ट कॉलिंग दैट एज मेनोपॉज. सो उसको पॉज लग गया, वो ब्रेक लग गया, अब वो स्टॉप हो गया. इट हैज बीन पॉज्ड, इट हैज बीन स्टॉप्ड. सो मीनार्की से स्टार्ट हो गया द फर्स्ट मेंसेस. आर्क इज प्रिमिटिव, पहले का. सो मीनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन. से लेकर मेनोपॉज तक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ अ फीमेल होता है, जिसमें कि menstruation and menstrual cycles go on in a monthly or in a cyclical manner. And that cyclical manner called menstrual cycle, that is what we have to see. What are its stages and what is the name of each stage and so on. So let's try to have a look at that. So for this, I will first clear this and I will be drawing something like a graphical representation which you should also practice. For practice, because I have small space, I will not be able to show very nicely. But आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक में इसका एक बढ़िया डायग्राम है, आप वो जरूर पढ़ लीजिए, देख लीजिए और उसकी पढ़ाई कर अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए. So we are going to describe a typical menstrual cycle of approximately 28 days. First, we will only just discuss the main stages and briefly we will talk of what happens during each of these stages. इसी के कुछ नोट्स भी मैं शेयर करूंगा और उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज भी शेयर करूंगा. अब ये 28 दिन की साइकिल कैसे होती है, क्या स्टेजेस होते हैं? क्या सभी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है? नो. कभी कभी इट कैन बी वेरी शॉर्ट, मच लेसर देन 28 डेज. कभी कभी it can be much more also, but more commonly it is somewhere around 26, 27, 28, 29, 30 days के आसपास, एक आध दिन आगे पीछे. So in most normal healthy females, on an average, the duration of the menstrual cycle is somewhere around 28 days cycle. It is very easy and convenient to understand a 28-day cycle. So when teaching, we will discuss a 28-day cycle. हो सकता है वो 27 दिन का भी हो सकता है वो 30 दिन का भी हो, थोड़ा आगे पीछे जरूर हो सकता है. Now let's then see a typical menstrual cycle of about, okay, sorry, let's get a better color
white will look better. Yeah, so let's get this. So we are going to show this something like a graph, जिसमें यहां हम डेज प्लॉट करते जा रहे हैं. सो दिस इज डे 0, देन डे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे अराउंड 14th डे तक, एंड देन कंटिन्यूइंग फर्दर टिल अराउंड 28 डेज. सो टिपिकल साइकिल इज डे 1 से लेकर डे 28 तक. इसमें अब क्या क्या फेजेस दिखेंगे और क्या क्या चेंजेस दिखेंगे. तो सबसे पहले तो इसके शुरू के 3-4 दिन जो होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 days, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज. यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट फेज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज या फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन. दिस लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 days, 3 to 4 days in some people, sometimes only 3 days. So varies a little, but about 3 to 5 days on an average. इसको हम menstruation की पहली फेज कहेंगे, menstrual phase of 3 to 5 days. इसमें इस menstrual phase में क्या होगा we will come to shortly, but पहले मैं सारे नाम लिखना चाहता हूं सारे phases के. So पहले 3 से 4 दिन के लिए menstrual phase. उसके बाद जो फेज आती है उसको कहते हैं, या तो it can be called as a follicular phase, FOLLICULAR, follicular phase, या it can, just a second, let me correct the spelling here, follicular phase, but it can also be called as the proliferative phase. So second phase is proliferative phase or follicular phase. Third phase is phase of ovulation या ovulatory phase. Ovulatory phase बोलिए या ovulation phase बोलिए, both are acceptable. And fourth and last stage is what is called as luteal phase, LUTEAL, luteal phase, but it can also be called as secretory phase, SECRETORY. Don't call this secretary as in SECRETA, वो secretary होती है जो officers को मदद करती है, that's different. ये secretary है, secretary नहीं है, इसमें TORY है. So ये luteal या secretory phase है. This ends and the next menstrual cycle with once again a menstruation phase begins. इस तरीके से एक साइकिल 28वें दिन तक चलेगी, about 28 days. दूसरे दिन जब से bleeding, या as we said technically this is not really bleeding but it is actually endometrium tissue, inner lining, वो जैसे ही बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, menstruation शुरू हो जाएगा, next cycle will begin. So cycle after cycle, 28 day approximately on an average, each cycle is progressing. Now, these are the 4 phases. Menstrual phase 3 to 5 days. Follicular या proliferative phase is from about 3rd, 4th day till about just before 14th day. So till 14th day तक. So up to 14th, मैं arrow लेकर 14th तक दिखा रहा हूं, 14 day तक. The phase is not for 14 days. उसमें से पहले 3-4 दिन तो menstruation चल रहा है. So it is for a duration of about 10 days only. 10 days. Ovulatory phase is a very short phase of about half to 1 day around the 14th day. 14th day, one single day के आसपास. For a 28 day cycle, वो थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, and lasting about 12 hours to 24 hours. This is a short phase. And lastly, luteal या secretory phase, ये इसके खत्म होने के बाद यानी कि 14th day के आसपास या at the most 15th day के आसपास start हो जाएगी and will go from about 14th या 15th day till about 28th day, till the end of this menstrual cycle and start of the next menstrual cycle. ऐसे ये 28 दिन में ये 4 मेन फेजेस हमको देखने को मिलते हैं. एक बार नाम रिपीट करते हैं. मेंस्ट्रुअल फेज 3 to 4 days, from about 3rd, 4th, 5th day onwards till about almost 14th day we have what we call as
follicular phase or also called proliferative phase. Around the 14th day, maybe a little half a day before or half a day after that, or maybe one day before or after that, around the 14th day, for about one day, 12 hours to 24 hours तक, ovulatory phase या ovulation phase and ovulatory phase खत्म होके, यानी कि 14 दिन खत्म हो गए हैं या 14.5-15 दिन खत्म हो गए, तब से लेकर till 28 day, till the end of this menstrual cycle and start of the next, that is what we call as the luteal phase or also called as the secretory phase. अब इन चार phases में किस फेज में कौन से हार्मोन की लेवल कब बढ़ती है, कब कम होती है, ये डिस्कस करने जाएंगे. सो लेट्स क्लियर द नेम्स. यू शुड नोट द नेम्स not only on a piece of paper and writing, but very importantly you should note them here. You should learn these names. So इसको आप चाहो तो पॉज करके लिख करके ले सकते हो, और नोट्स में तो मैंने शेयर किया ही है. इसको मैं अभी क्लियर करने जा रहा हूं. So let me clear away this. Yes. अब इसमें first 3 to 4 days menstrual phase. So this is menstrual phase. Around the 14th day, for about one day, half a day to one day, that is ovulatory phase. ये वाला पार्ट जो है, this is follicular phase, and ovulation, which we said lasts for about half to one day. So यहां से लेकर end of one menstrual cycle tak, this is what we call as luteal phase. Can also be called secretory. This can also be called as follicular phase का दूसरा नाम है proliferative phase. ये आपके चार phases हैं. अब इसमें हार्मोन लेवल्स, अलग अलग हार्मोन्स की कैसे चेंज होती है, सबसे पहले हम सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे और क्या चेंजेस है डिस्क्राइब करेंगे. फिर हम बाद में इसके लॉजिक में थोड़ा जाएंगे टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हो रहा है. तो पहले start with pituitary hormone called follicle stimulating hormone, FSH. So we are describing now, once again, to be very clear, a typical menstrual cycle which will be visible in a lady who is in the regular menstrual cycle stage of life, which means in the regular reproductive stage of life. So somewhere 12 साल की उम्र में ये प्रोसेस शुरू हुआ है. शुरू में थोड़ा आगे पीछे, धीरे, स्लो, कभी तेज होते होते स्टेबल हो चुका है. 28 डे की करेक्ट रेपिटेटिव साइकिल बनते जा रही है. ऐसे में क्या हार्मोन लेवल चेंजेस दिखेंगे, ये हम देखने जा रहे हैं. So ऐसे में we find that pituitary hormone called follicle stimulating hormone. So we'll give a different color for FSH. So I'm using green color for FSH. So FSH is in this green color. इसकी लेवल धीरे से थोड़ी बढ़ती है, पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती. थोड़ी सी बढ़ने के बाद वो स्टेबल हो जाती है, and it remains stable. Somewhere around 14th day, it increases a little and again falls and again steadily falls and comes back to normal, so that in the next menstrual cycle it can again start rising. ये है टिपिकल FSH का पैटर्न. पिट्यूटरी में ही दूसरा एक हार्मोन भी है जिसका नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको मैं अब ब्लू कलर में दिखाना चाहता हूं. सो दिस आई विल शो ओवर हियर इन ब्लू कलर, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. शायद ये कलर्स आपके यहां थोड़े ठीक ना दिखे. चलो लेट्स ट्राई स्लाइटली बेटर कलर. सो इसकी जगह, ब्लू की जगह, वी विल टेक मे बी अ येलो कलर. दिस विल लुक contrasting better. So luteinizing hormone LH, इसकी लेवल शुरू में एकदम कम होती है, hardly any level, एकदम छोटा सा basal secretion, a very small baseline level is maintained. At around the 14th day, this level increases very sharply and then starts falling again rapidly and comes back to normal and remains normal or low all after that.
till it again goes through one more sudden rise in the next menstrual cycle around the 14th day. इसको कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH का स्पाइक. Spike means a sharp pointed structure. So you are getting something like a sharp increase around the 14th day. Because of that itself actually ovulation हो रहा है and what we call as luteinization हो रहा है. इसीलिए इस हार्मोन का नाम है luteinizing हार्मोन. जैसे ये पिट्यूटरी हार्मोन्स की लेवल्स चेंज हो रही है वैसे ही ओवरी के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो दो मेन फीमेल हार्मोन्स है, इनकी लेवल भी कुछ चेंजेस दिखाती है. सो दोज अगेन वी विल शो विथ अ डिफरेंट कलर. सो वी विल यूज मे बी रेड कलर फॉर ईस्ट्रोजन. सो OESTROGEN या ESTROGEN, इसकी लेवल शुरू में थोड़ी सी बढ़ जाती है because follicle stimulating hormone stimulates the follicles and they produce estrogen. So with increase in FSH, estrogen also increases. जैसे बढ़ जाता है तो वो follicle stimulating hormone को break लगाता है. It causes a little bit of negative inhibition kind of effect and it stabilizes here, but this increases a little and then again stabilizes, but somewhere around the 14th day it has reached a very high peak level. Thereafter it again starts falling a little and increases a little bit but not too much and comes back to normal या baseline to start increase once again in the next menstrual cycle. So ये है estrogen का approximate role. अब कुछ बुक्स में ये थोड़ा सा अलग भी दिखाई देगा, such as for example you may find कि इसको थोड़ा ऐसे दिखा के, थोड़ा कम दिखा के, फिर एक बार बड़ा दिखाया हुआ. That is all acceptable. Small changes can be there from one book to another, but what is important is it starts from a low level, increases, comes to a peak somewhere around the same time as this, just a little before ovulation. It increases to maximum possible height, then again starts dropping but has a little bit of an increase for some time and then comes back to baseline. Then again it will start increasing in the next menstrual cycle. So ये है estrogen का level. अब साथ ही साथ एक और हार्मोन भी है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन. सो लेट्स राइट दैट नेम, प्रोजेस्टेरॉन. नाउ दिस आई नो इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजीली विजिबल ऑन योर स्क्रीन क्योंकि ये कलर जो है ये ग्रीन के साथ उतना कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ा सा तो दिखाई देगा और आपके सामने टेक्स्ट बुक भी तो जरूर है. तो सिर्फ इसकी लेवल हम देखेंगे. प्रोजेस्टेरॉन की लेवल शुरू में एकदम कम होती है बट आफ्टर ओव्यूलेशन इट इंक्रीजेस क्वाइट रैपिडली and reaches a very high peak and then starts falling and comes quite low and that is followed by menstruation. इसके बाद आगे इसकी कहानी क्या है वो अगले menstrual cycle में. So यहाँ इसकी कहानी starting from a very low level, it remains low all through the first 14 days. Once the corpus luteum has been formed after release of ovum, after ovulation, now progesterone level will increase. So it is the job of the corpus luteum to produce the progesterone. The word progesterone as we said means gestation favoring, यानी कि प्रेगनेंसी को फेवर करने वाला हार्मोन. तो ये लेवल ज्यादा हो तो प्रेगनेंसी आगे बढ़ सकती है, नहीं तो प्रेगनेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा. ये बात आप याद रखो. सो इस तरीके से ये चार हार्मोन्स के चेंजेस हमने देख ली. अब अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज हार्मोन ओवरीज में क्या चेंजेस हो रहे, यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे, ये देखते हैं. तो ओवरी के अंदर व्हाट वी फाइंड इज दैट द फॉलिकल्स आर इंक्रीजिंग इन साइज. द inside the follicles the primary oocyte is continuing with its meiosis, and so those stages that we spoke of as primary, secondary, tertiary, ovary, which are there for different follicles in the ovaries, क्योंकि सब एक साथ नहीं बढ़ते हैं, कुछ पहले कुछ बाद में, तो ये प्रोसेस चलते जा रहा है. धीरे धीरे टर्शरी फॉलिकल बनकर, सो विच मीन्स कुछ सेल्स यहां रैपिडली डिवाइडिंग एंड लेट मी कंप्लीट दिस. यहां भी कुछ सेल्स रैपिडली कंप्लीटिंग एंड इनसाइड दिस द प्राइमरी oocyte
एंड लास्टली समवेयर अराउंड ओव्यूलेशन इट हैज बिकम अ ग्राफियन फॉलिकल जिसमें से ओवम हैज बीन रिलीज्ड एंड इट हैज कम आउट विद अ फ्यू सेल्स अराउंड इट कॉल्ड एज द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। इसका डायग्राम हम थोड़ा बाद में बनाएंगे, लेकिन इस तरीके से ये ओवम रिलीज हो गई है ओवरी के वॉल से। इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है वो अब श्रिंक होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसमें से फ्लूइड थोड़ा बाहर आ जाएगा, इसकी वॉल भी थोड़ी सी कोलैप्स हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट बिकमिंग a corpus luteum which looks like this, which is much thinner in appearance, not so active, and this can live for another 8 to 10 days or 10 to 12 days and धीरे धीरे ये भी atretic होके एकदम छोटा सा सूख कर almost गायब हो जाएगा and the unfertilized ova will also have by now been removed and so on. Those which could not grow further उनका भी atresia हो चुका है। So अब ये इसके आगे ओवरी में कुछ खास चेंजेस नहीं दिखेंगे। इस पार्ट में फॉलिकल की ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको फॉलिकुलर स्टेज कहते हैं। इसमें कॉर्पस लूटियम यू गेट टू सी एंड द मेन लेवल इंक्रीज इज ओवर हियर फॉर द प्रोजेस्टेरॉन। बाकी सबके आप देखोगे तो लेवल काफी नीचे है, ये बड़ा हो गया है। सो ये सेक्रेटरी एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए है, ये आपका लूटियल फेज। Follicular phase के लिए as we said you can also call it as proliferative and luteal can also be called as secretory। अब ऐसा क्यों, वो देखने के लिए यूट्रस के चेंजेस देखते हैं क्या है। सो इसको मैं जरा रब कर रहा हूं इन नामों को and let me see what happens inside the uterus। So inside the uterus ये जो lining tissue था एंडोमेट्रियम का, ये यूट्रस है, ये इसके अंदर का ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। ये पहले 3 से 5 दिनों में इट हैज कम आउट। सो वी ट्राई टू शो दैट विथ अ वेवी लाइन गोइंग डाउन विथ सम ब्लड कमिंग आउट। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग दैट दिस इज सम काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड लॉस। It's not as we said purely blood, it is actually inner lining of uterus also। ये सब रिलीज हो गया है। यहां से under the effect of the estrogen which has come out in response to FSH। So FSH ने estrogen की concentration बढ़ाई, estrogen अब इनको और stimulate करेगा and inside the primary follicle the primary oocyte continues with its meiosis। एंड सो ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज वो बढ़ते जाएगा, मायोसिस पूरी करने की कोशिश करेगा। ऐसे ऑल थ्रू लाइफ होता रहेगा। कुछ महीने पहले जिसने शुरू किया अपना मायोसिस प्रोसेस दोबारा, वो मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज करते करते ओव्यूलेशन फेज तक अगर आ गया तो इससे ओव्यूलेशन बनेगा। जो वहां स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे दोज आर डिस्ट्रॉयड बाय द बॉडी। सो दिस वे यू स्टार्ट फाइंडिंग दैट some progress has happened up to the 14th day on which ovulation has taken place। Just a little before this or just a little before the actual ovulation, the hormone levels have gone up a little and this sudden increase in luteinizing hormone, the LH spike, that is what has actually brought about the ovulation। Now after this, in the remaining part, in the luteal phase also called secretory phase, इस यूट्रस लाइनिंग एंडोमेट्रियम में जो कुछ ग्लैंड्स है जिनके पास लाइनिंग में सेल्स है और जिनकी सेक्रीशंस यहां रिलीज होके इस इनर लाइनिंग को सॉफ्ट बना रही है और आने वाले फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो अगर वो लेडी रिप्रोड्यूसिंग प्रोसेस में इंटरेस्टेड है तो बच्चा चाहती है तो यहाँ पे इनकी तरफ से इसको न्यूट्रिशन और सुटेबल प्लेस फॉर इम्प्लांटेशन इजी हो जाएगा। एंड सो द नंबर ऑफ सेक्रीशंस हैज टू इंक्रीज। सो ये जो ब्रांचेस है ये ग्लैंडुलर ब्रांचिंग बहुत एक्टिव हो जाता है so that you get more number of cells and they produce more amount of nutrition and that can be available for the developing baby। So secretions बढ़ रहे हैं इसलिए इसको secretory भी कहते हैं। corpus luteum ovary में main important structure है जिसका main hormone contribution अभी हो रहा है progesterone का। So इसको हम luteal phase भी कह सकते हैं।
सो दीज आर द 4 phases. जब ल्यूटियल फेज खत्म हो जाएगा तो अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगा. This way you get a 28-day cycle divided into these main 4 phases or the main 4 stages. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों बढ़ा, इसका क्या असर आया और यहाँ एंडोमेट्रियम चेंजेस से क्या असर आया, ये थोड़ा सा डिस्कशन हम अगले वाले सेशन में, अगले डिस्कशन में कंडक्ट करेंगे. आज हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्क्रिप्शन पूरा कर लिया है. मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इससे रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड एमसीक्यूज भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं. सॉरी, जैसे कि ऑन विच डे डज ओव्यूलेशन टेक प्लेस, एट व्हाट स्टेज और व्हेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल द एलएच लेवल बी हाईएस्ट. इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स नोट्स में मैंने शेयर किया हुआ है. उसमें आप नोट्स की भी प्रैक्टिस करो और एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करो. अपनी पढ़ाई जारी रखो. जय हिंद.